जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर हम लोग का है चैप्टर 10 और इसमें है जी कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा बिज़नेस के लिए या बिज़नेस में पैसे की ज़रूरत है किसी भी स्टेज पे, तो वो कहाँ से फंडिंग होगी, फंडिंग या फाइनेंसिंग। तो चैप्टर है जी 10 और हम लोग के बिज़नेस में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब आपको बिज़नेस में पैसे की ज़रूरत होती है, या तो पैसा होता ही नहीं है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, आइडिया होता है या बिज़नेस चल रहा होता है, फिर भी आपको कभी ना कभी कैपिटल रेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। 3 बेसिक रीज़न हैं जिसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है, और वो है जी आपका नंबर 1 कैश फ्लो चैलेंजेस। कैश फ्लो है जी कि आपके जो डेली के या मंथली के जो एक्सपेंसेस है उसको कवर करने के लिए तनख्वाह देनी है आपने अपने एम्प्लॉय को, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, एडवर्टीजमेंट करनी किसी चीज़ की ताकि आपकी सेल्स हो जाए। तो ये एक्सपेंस कवर करने के लिए आपको कैश फ्लो चैलेंजेस का सामना होता है। फिर जी आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपने कोई चीज़ परचेज़ की, आपने बिल्डिंग इक्विपमेंट फर्नीचर कोई चीज़ एसिड परचेज़ करना है, उसके लिए पैसे चाहिए आपको। फिर आपका जो लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, जिसमें आपकी चीज़ बन चुकी होती है लेकिन फ्यूचर में आप इनोवेशन की तरफ जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं फ्यूचर में ये चीज़ लॉन्च करूँगा, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। और इसको कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए ताकि फ्यूचर में हम और बेटर वर्जन किसी चीज़ का लेके आ सकें या सस्ती बना सकें कोई चीज़। तो अब पैसा आएगा कहाँ से? उसके सोर्सेज़ क्या है? क्या वेज़ हैं? हम लोग के पास पर्सनल फंडिंग है, हम लोग के पास इक्विटी कैपिटल है, हम लोग के पास डेट फाइनेंसिंग है और क्रिएटिव सोर्सेज़ हैं। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जी आपका पर्सनल फंडिंग। पर्सनल फंडिंग में जी आपका खुद का पैसा, आपका खुद का पैसा है जी, आपका जो सेविंग किया हुआ है, या आपने किसी अपने फ्रेंड से, फैमिली से ले सकते हैं, मतलब खुद का पैसा। इसको स्वेट इक्विटी भी कहते हैं, खून पसीने की कमाई। इसमें आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आते हैं। आप पैसा ले सकते हैं अपने वालिद साहब से, अपने फ्रेंड से, तो वो पर्सनल फंडिंग में ही कंसिडर होता है, क्योंकि आप इनको कभी भी पैसा वापस कर सकते हैं। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जिससे भी पैसा ले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर से, उनको भी प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी जाए, बताएं कि बिजनेस प्लान क्या है और कब तक पैसे वापस करें, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंट हो आप पे। अब आप ये सोचें, आपकी क्लास में ऐसा कौन सा फ्रेंड है आपका जो आपको पैसे दे सकता है, अगर आपको 10 लाख दे सकता है अगर आप उससे मांगे बिजनेस के लिए। और ऑन दी अदर हैंड ये सोचें कि आपके पास 10 लाख हैं, तो क्लास में से आप किसको पैसे दे सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिस पे आपको कॉन्फिडेंट भी हो और ये पता हो कि धोखा नहीं देगा और बिजनेस चलाएगा तो कामयाब होगा उसका। फिर पर्सनल फंडिंग में ही बूट स्ट्रैपिंग आती है। बूट स्ट्रैपिंग भी आपका, ये देखें, ये बूट बना हुआ है, ये उसके स्ट्रैप हैं, ये स्ट्रैप की वजह से बूट में ग्रिप मिल जाती है। इस तरह से बिजनेस में भी अपने आप ग्रिप लेके आते हैं ताकि जो खर्चे हैं वो कम हो जाए, आपकी सेविंग है वो ज़्यादा हो जाए। अब किस तरह से आप ये कर सकते हैं बिजनेस में बूट स्ट्रैपिंग? आप सेकेंड हैंड इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं, आप इंटर्नी हायर कर सकते हैं, लीजिंग पे सामान ले सकते हैं, कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकते हैं डिस्काउंट दे के, ताकि आपके पास पैसा आ जाए और पैसा किसी और चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकें। अपने पर्सनल एक्सपेंसेस आप कम कर सकते हैं। ईबे पे चीज़ें आप लेके ऑफ़र कर सकते हैं, बेच सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो वो शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। कभी आपने देखोगे कि दुकान के बाहर वो शॉर्ट में लगाया लगाया होता है किसी ने, तो वो एक एक्स्ट्रा जगह होती है, वो जगह शेयर कर रहे होते हैं। तो ये एग्जांपल है बूटस्ट्रैपिंग। आप ये सोचें कि आपकी यूनिवर्सिटी बूटस्ट्रैपिंग किस तरह से करती है, किस तरह से पैसे सेव करती है एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। अब हमें अगर डेट या इक्विटी फाइनेंसिंग चाहिए, उसका वे क्या है कि सबसे पहले सोचें आपको पैसा चाहिए कितना है। लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। फिर जब आपको ये आइडिया हो कितना चाहिए, फिर ये फाइंड आउट करना है कि ये प्रोवाइड कौन करता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या जितना भी पैसा चाहिए आपको कौन सी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन 1 लाख देते हैं, कुछ 10 लाख देते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट कम चार्ज करते हैं, कुछ ज़्यादा चार्ज करते हैं, कुछ डेट फाइनेंसिंग करते हैं, कुछ इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं, स्टॉक की ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 3 पे है कि आपने स्ट्रेटजी डेवलप करनी है कि उनको अप्रोच कैसे करना है, उनको प्रेजेंटेशन और फॉर्म कैसे सबमिट करवाने हैं। ये है जी 2 बेसिक फॉर्म ऑफ जिससे आप पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। एक है जी आपका इक्विटी फंडिंग, एक है जी आपका डेट फाइनेंसिंग। अच्छा, ये मैं आपसे पूछूंगा
कि फंडिंग और फाइनेंसिंग में डिफरेंस क्या है। दो डिफरेंट चीज़ें। अब इक्विटी फाइनेंसिंग में आप ओनरशिप एक्सचेंज करते हैं, मतलब जिस स्टॉक है जिसने परचेज किया आपके बिजनेस में, वो आप उस अमाउंट का आपके बिजनेस में ओनर बन जाता है। और डेट फाइनेंसिंग में जस्ट लोन, आपने जितना लोन लिया है बैंक से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से, वो आपने उतना वापस करना होता है विद परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। फिर जी एलिवेटर स्पीच, जब भी आपने किसी को प्रेजेंट करना है अपना बिजनेस प्लान, बिजनेस आइडिया लोन के लिए, तो आप एक एलिवेटर स्पीच प्रेजेंट करते हैं। बस 2-3 मिनट की होती है, शायद उससे भी कभी-कभी उससे भी कम होती है, डिपेंडिंग ऑन योर आइडिया। वो आप प्रेजेंट करते हैं और इसमें ये समझ आ जाता है कि आपका आइडिया क्या है, आपकी जो मार्केट की नीड है वो कैसे फुलफिल होगी और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया, यहाँ पे 60 सेकंड्स बताए गए हैं। आप बताते हैं जी कि क्या अपॉर्चुनिटी है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसको कवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं आपकी बुक में एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये मैंने ढूंढ के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी ने एलिवेटर स्पीच प्रेजेंट करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बैंक को, वो कहता है जी हाय दिस इज तैयब, आई एम a social media manager for business owner who want to grow their following and engagement on Instagram and Facebook while having more time to focus on their work with the clients। ठीक है, ये समझ आती है कि आप एक ऐसा बिजनेस करते हैं जो एडवर्टीजमेंट प्रमोशन का है ऑन सोशल मीडिया, उन लोगों के लिए जो बहुत बिजी रहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। और आप कैसे इसको, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया मैनेजर का। और ये मैंने यूट्यूब का लिंक दिया है, इसमें और भी एलिवेटर स्पीच एग्जांपल्स है, ये आप लाजमी देखिएगा। If you're a service-based business owner, you know you need a great elevator pitch for when you present yourself to potential clients. And it can really make a difference between people saying, "Oh, interesting, yeah, let's keep in touch," versus, "That's exactly what I need. How can I book a call with you?" Do you see the difference? But it's not always easy to get it right. So in this video, I'm gonna share with you 4 examples of business elevator pitches to help you create yours. For each example, you will see the format that I've used, so you can simply fill in the gaps and adapt it as you see fit. Hi, my name is Veronica and this is Step Up with V. I'm here to help you build your personal brand and communicate the value you offer with clarity and confidence so that you can take your career and business to the next level. If you're new to my channel, please subscribe and click on the notification bell so you'll get notified every time I post a new video. Alright, so let's dive in. Example 1. I help fast-growing tech companies create structure in their organization so they can successfully scale their business while keeping both employees and customers happy. Example 2. I help busy executives manage their time and avoid burnout so they can enjoy their work, stay healthy, and create a positive impact in their organization and industry. Example 3. I'm a social media manager for business owners who want to grow their following and engagement on Instagram and Facebook while having more time to focus on their work with clients. Example 4. I create trendy and user-friendly websites for e-commerce businesses who need more traffic to attract and engage new clients. If you've noticed in my examples, I really focused on connecting with the client's challenge or goal and showing the result you would help them create. Now over to you. Take some time to write your business elevator pitch and then post it in the comment section below. I'll do my best to give you my feedback and help you refine your pitch. As an additional note, it's also important that you own your pitch when you deliver it. So make sure you check my video on how to pitch yourself with confidence that is appearing on your screen right now. I hope this video was helpful to you. If so, please give it a thumbs up and share it with other business owners who want to create a great business elevator pitch to land their ideal clients. Until next time, thank you so much for watching and I'll see you soon. Your personal brand so that you can take your career and business to the right. और इक्विटी फंडिंग के और कौन से सोर्स है, आपका वेंचर कैपिटल, आपका बिजनेस एंजल और आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बिजनेस एंजल में वो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं
या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसे लोग जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनका बिजनेस वेल एस्टेब्लिश होता है, जिनके पास पैसे भी होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो आपके बिजनेस को समझते भी हैं क्योंकि वो भी एंटरप्रेन्योर रह चुके होते हैं। तो वो ढूंढ रहे होते हैं कि अपना पैसा जो फालतू पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दें या किसी की हेल्प कर दें। फिर ऑफ कोर्स वो या तो आपसे ऑनरशिप चार्ज करते हैं या तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं या बहुत बहुत कम चार्ज करते हैं, या डिपेंडिंग ऑन ये बिजनेस एंजल किस टाइप का, इसकी नेचर क्या है। बहुत मुश्किल है इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके आसपास भी अक्सर आपको लोग मिल जाते हैं, पता नहीं होता। अगर आप गूगल पे जाएं आपको मिल जाएंगे बहुत से पाकिस्तानी, दुनिया में भी और भी मिल जाएंगे। और जैसे मियां मंशा हो गया, मलिक रियाज हो गया, ये तो बहुत ही ऊंचे लेवल की गेम है। लेकिन अपने आसपास देखिए आम लोग भी होते हैं, छोटी दुकान छोटे लेवल पे जो बिजनेस है वो भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर है जी आपका वेंचर कैपिटल, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन्वेस्ट करती है आपके बिजनेस में। ये ढूंढ रहे होते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास आइडिया है, उनके आइडिया में फंडिंग करते हैं, फिर आपको ये पार्टनरशिप ऑफर करते हैं कि इतने परसेंट उनका प्रॉफिट होगा, इतने परसेंट आपका प्रॉफिट होगा, वो आपको हेल्प करेंगे एस्टेब्लिश करने में बिजनेस। तो ये बहुत आजकल इन है, सेफ साइड है। कुछ एक्सपेंसिव है लेकिन सेफ साइड है क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, और ये आगे से फंडिंग करवाते हैं, फंडिंग आपके लेके आते हैं बैंक से। बिजनेस एंजल्स को भी ये लोग ढूंढते हैं और ये आपकी हेल्प भी करते हैं बिजनेस चलाने में, टारगेट ऑडियंस में को एडवर्टीजमेंट करने में। तो ए टू सी आपकी बहुत हेल्प करते हैं। और इस वेंचर कैपिटलिस्ट डिफरेंट स्टेजेस भी होती हैं, कुछ स्टार्ट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ कहते हैं जी आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन मोस्टली स्टार्टिंग से जीरो से आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे प्लान 9 है, आपका लम्स वाले हैं, आपका NIC वाले हैं, वी केयर पाकिस्तान है, ये फॉर वुमेन है, .0 इन्वेस्ट टू इनोवेट तख्लीक वाले, ये काफ़ी नए आजकल इनका प्रोग्राम भी आया हुआ था। फिर अगर आपने और डिफरेंस ढूंढना है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंजल एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, तो ये यूट्यूब का लिंक है, आप यहाँ जाएं, आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी। Hi, welcome to Ask Jay. I'm Jay Adelson. We're here to answer your question about starting businesses. It could be tech, could be anything. We don't care. Just keep it coming. It could be even your own lemonade stand as far as I care, but just send your questions to askjay@revision3.com. Let's get started. I'm Jay Adelson, and I'm the founder and chairman of Revision 3. I've founded a number of companies. I've been hired as a CEO, and I've even been fired as one. For example, Equinix is a company I took public in 2000 and now has a market cap of over $4 billion. In 2008, I was incredibly honored to have been selected as one of Time Magazine's most influential people in the world. My goal is to pass on some of this knowledge to you, the budding entrepreneurs, and hopefully leave you with some words of wisdom. This episode of Ask Jay is brought to you by Gamefly. Today's question comes from Jenny in San Diego, who asks, what's the real difference between angels and VCs, and which should I choose? Well, you know, it's funny. You get all of this information out there about angels and super angels and, you know, venture capitalists and seed funds and all this noise. The reality is, I hate to say it, you take money where you can get it. And if a VC is offering you money or an angel is offering you money, yes, you basically take it if you can. Now, if you have choice, if you have an amazing idea, I know that in the case of Dig, we had this website that was growing pretty well before it actually needed to raise any money. So in that position, you have choices. At that point, it's important to understand. So let me list it out for you. Angels are basically individuals who have their own money to invest. It's usually, you know, investments limited to, I'd say, you know, $10,000 to like, you know, maybe $250,000. And there are some big name angels, and then there are some real, you know, sort of quiet behind the scenes angels. You know, you've heard names like Ron Conway in Silicon Valley and others. These are big time angels who invest larger numbers. What's nice about those
those type of investors, they tend not to jump on your board of directors at first. They tend to be more connectors. They help introduce you later to venture capitalists if you need it and so forth. And sometimes they're very active and they'll work really hard for you because they're going to get a big return because they're investing very early. Then you have venture capitalists. Venture capital firms, remember, they're investing other people's money in your idea. Big billion-dollar funds that they've raised from what they call LPs, these big investors. And so those type of investors typically want to take 20 to 30% of your company. They typically want to get big, 10x to 100x returns on their investment. And so they're going to join your board. They're going to try and steer you towards the most massive potential exit possible, which you might not want to do. So you have to think hard before taking that money. And then there's a number of different, I guess you can call in-between type of investors. Super angels is a popular term right now, where sometimes it's a combination of their own money and other money, but they invest larger amounts, like $1 million in your idea. I like these in-between investors because they give you all the benefits of angels without all the high pressure on super return that a VC has, and gives you more time to figure out your business before you execute. So in a minute, I'll give you some more details on how to make this choice between VCs and angels. But first, I wanted to thank our sponsor. Gamefly is the largest online video game rental service and offers you a choice from over 7,000 new and classic titles across all consoles and handhelds. With plans starting at $15.95 a month, Gamefly members can rent 1 to 4 games at a time and keep them for as long as they like. There are no late fees, no due dates, and shipping is always free. Once you're done playing a game, send it back and Gamefly will send you the next available game on your list. If you really like the game you're playing, simply click Keep It on the Gamefly website and the game is yours at a discounted price. Gamefly will even mail you the case and manuals free of charge. Ask J fans get a 15-day free trial when they go to www.gamefly.com/J. Today's homework assignment is to figure out whether or not you're in the angel time or the VC time is figure out what the least amount of money is that you could take for your business. I want you to take a piece of paper and write down what defines your next milestone and success at that next milestone. Like maybe it's a release of your website, or maybe it's a certain number of customers, and figure out literally what the least amount of money is. If that number is less than $100,000, you shouldn't even be talking about venture capital. The only time you should start thinking about venture capital is literally when you're in this business structural phase where you're thinking about numbers that are north of $1 million. And I know these are crazy numbers and you think that they're almost inaccessible, but I'll tell you, any one of you could build a business that raises millions of dollars. So write it down, figure it out, and then I'll help you make your decision. So that's it for today's show. Again, thank you for sending us these great questions. We want more, so keep them coming to askj@revision3.com, and we'll try and get them on the air. And don't forget, you've got nothing to lose. Find that screw that's loose and listen a little bit more, and I'll see you next time. फिर है जी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको आईपीओ कहते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम अपने स्टॉक लिस्ट करती है उसको आईपीओ कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और इसमें शेयर्स इशू किए जाते हैं। और इसके रीज़न क्या है, क्यों आप इससे फंडिंग इकट्ठी करते हैं? बिकॉज ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आपको इक्विटी रेज करना इजी है अपने कैपिटल अपने बिजनेस के लिए, बिकॉज इसमें आम बंदा भी इन्वेस्ट कर सकता है और कम लेवल पे भी कम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकता है, इससे सबका इंटरेस्ट भी रहता है। और नंबर 2 रीज़न है क्या, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पब्लिक में चली जाती है तो पब्लिक का कॉन्फिडेंट होता है कि फेक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देन नंबर 3 रीज़न है कि लिक्विड फॉर्म है, इसमें आप इस शेयर्स को बेच के भी पैसा कमा सकते हैं, लिक्विड फॉर्म है, इस वजह से इसको ऑफर करते हैं। फिर थर्ड फॉर्म है कि अगर आपने बिजनेस को बेचना है या बिजनेस को परचेज करना है
तो आपके पास अगर स्टॉक में है तो इजीली परचेज या बेच सकते हैं अपने बिजनेस को। कमर्शियल बैंक है अगेन सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग। Commercial bank is the one of the oldest form of source in getting the finance financing। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, ये गारंटी बहुत ज़्यादा मांगते हैं, प्लेज करवानी पड़ती चीज़ें, तो इसका प्रॉपर ऑडिट होता है, तो यही इसका डिसएडवांटेज है। फिर अदर सोर्स में आता है जी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्कस कर चुके हैं, और क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड में भी आपको अच्छी लिमिट मिल जाती है, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड विद इन स्पेसिफिक डेज इसको वापस करना होता है पैसे, वरना आपको इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है और आपकी क्रेडिट लिमिट भी इंक्रीज नहीं होती। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे 5000 पाउंड का क्रेडिट कार्ड ऑफर हुआ था, और मैंने वैसे से स्टॉक परचेज करता था और विद इन 40 डेज हमेशा पैसे वापस किए हैं, तो क्रेडिट लिमिट हमेशा इंक्रीज होती गई, तो मेरी 11,000 पाउंड तक पहुंच गई थी। फिर आपके पास एक ऑप्शन है पीयर टू पीयर लेंडिंग नेटवर्क है। ऐसे प्राइवेट वेबसाइट बनी होती है जहाँ पे लोग आते हैं, वो ऑफर देते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई लेना चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, और जिसको पैसे चाहिए वो कांटेक्ट करता है। रिस्की है क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे फेक बंदा है या बंदा ठीक है, और जैसे OLX है, इसमें बायर और सेलर मिल जाते हैं आपस में। ये है पाकिस्तान में भी होता है, वर्ल्ड वाइड ज़्यादा है। फिर आपके अदर क्रिएटिव सोर्सेज हैं जिसमें लीजिंग है। लीजिंग पे आप चीज़ें कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस इनोवेशन ग्रांट है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ग्रांट प्रोग्राम है। मतलब आपका जैसे कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, और आपका जो डिजी स्किल्स वाले हैं, ये ई रोजगार वाले हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं बिजनेस, स्मॉल बिजनेस को कोर्सेज सीखने में, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने में। और तख्लीक वाले हैं वो आपको देते हैं 1 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती हैं। वो उनका मकसद होता है कि जैसे उनका मकसद होता है कि जब उनके बिजनेस में आइडिया की कमी हो जाए तो वो क्राउड के पास जाते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं, जिसको कहते हैं क्राउड सोर्सिंग। क्राउड के पास जाते हैं। एक होता है आउटसोर्सिंग, एक होता है क्राउड सोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में हमें पता है कि हमने इस बंदे से चीज़ें परचेज करनी है, इस बंदे को ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन क्राउड सोर्सिंग में हमें नहीं पता कहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा। पब्लिक के पास जाते हैं, या तो उनसे आइडिया परचेज कर लेते हैं, या उनको पार्टनर बना लेते हैं, या उन्हीं का बिजनेस रहता है, आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं और उस पर पार्टनरशिप बना लेते हैं। ये ऐसे एक्सप्लेनेशन की गई है, और बस दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। अब आप लोगों ने ये करना है कि मैं आप लोगों को एक और ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है। इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि TEDx क्या है। इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पैसा कहाँ से आप लेके आ सकते हैं। ये लड़का है, इसने पैसा की स्ट्रेटजी बताई कि पैसा कहाँ से आ सकता है और क्या इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी है। Are you having a great time today? Yeah, fantastic. So my name is Max Gushan, and 1.5 years ago, I was in this startup in Stavanger, and during those 1.5 years, I met some challenges and gained some experience. And today I want to speak to you about 3 main challenges. One is lack of knowledge, one is lack of money, and one is lack of time. So it's been 1.5 years since we started up, and the first challenge we met was I felt I can't do it. What a great feeling to have when you start up a company. I can't do it. Let me give you 2 examples. If you, for example, want to make an iPhone app and you can't program, you will automatically feel, I can't do this. In my case, I lacked engineering knowledge. And that gave me 2 choices. Either take a master's degree, work 5 or 10 years in the oil and gas industry, and then start up in 15 years, or I could find somebody who has done that before me, because sometimes I'm a little bit impatient. So I choose the second alternative. But I soon found out that finding engineers in Stavanger is not that easy, especially when you don't have a degree and you have 0 kronas and you're 18 years old. And I wanted to have the best engineers. I didn't just want to have engineers. I want to have the best that I could find in Stavanger. Today we have 4 of the great engineers working on the Clicklet project. And I got them
by showing up. It's all about saying yes rather than no. It's all about getting out of the sofa and showing up where it's happening. Let me give you 2 examples. Does anybody know who this guy is? Nobody, never does, so fear not. This guy, his name is Bill Fernandez. Bill Fernandez had an awesome friend called Steve Jobs. And one evening he says, hey Steve, I want you to meet a friend of mine. Do you want to hang out tonight? Steve Jobs could have said, nah, I'm going to do some homework, now I'm going to relax, I'm going to sit in the sofa and watch TV. That wasn't Steve Jobs. He said, yes, of course, let's meet him. And that yes and that meeting resulted in him meeting Steve Wozniak. And together, formed Apple, changed the world, you know the story. And that shows how important it is to say yes rather than no. In my case, 2 years ago, my phone rang. I was in this political board meeting, and I remember that phone call because it changed my life. I took up the phone, and it was this guy named Sjur Usken who called me. And I didn't know him then. And he asked me, Max, do you want to take participation in getting starter weekend to Stavanger? And my head thought, oh, I have 4 part-time jobs, I have 4 political positions, and I'm in college. I don't have time. But of course, my mouth never agreed with me, so I was like, yeah, come on, let's do it. This sounds fantastic, great, let's go for it. So, and I never regret saying yes on that phone call. I never regret it, because that ended up me going to start a weekend, and I met Arnfinn Matre. Arnfinn Matre, he's 35 years old, has almost 2 master degrees. He's one of the best engineers I ever known. And together, we joined Starter Weekend, we formed a team, we won, and that was the beginning of ClickLift. I wouldn't be here today if I said no and choose to just be at home and relax that weekend. So I can't imagine how my life would be if I would just say no to that one phone call. It's amazing how the power of yes is. And Arnfinn, he's a really good guy. I remember he quit in National Oil, and they hired 500 people after he quit. I don't know if it was rapid expansion or to fill his space. You choose. And my best tip is to only hire the best. Because in a startup, you need to surround you with people that are much greater than you. I met Bjørn Kjos one time, the CEO of the Norwegian airline company Norwegian, and one advice he gave me, only find people that are better than you. And that's what we try to do. One thing that was really stuck me that at one point, me and Arnfinn had enough money to hire a student. And that was really special for me because we were running these interviews and we wanted to have the best student in Stavanger. And I remember 1 year ago, I couldn't get a job in the grocery shop because I wasn't qualified enough. And here I was supposed to interview this guy for a job. I think I was 10 times more nervous than he was on the interview. 10 times more nervous. And we got the best engineer we could have, Christian Sørensen. And I remember the first time we paid him salary, I'll never forget that feeling. I was really touched. It was so amazing to create value, and I wanted to have that feeling again. So only find the best. The people are out there. If you lack some knowledge, you can't get them. Second challenge is when you're in a startup, you don't have money. So I was walking around thinking, oh, I don't have money, because it was a natural feeling. And then I was at this business conference, and I spoke to an investor, and he said, Max, look around. What do you see? And I looked around, and I saw, well, a bunch of guys in their 40s and 50s wearing nice suits. And he was like, no, Max, what I see is walking millions and walking billions of kroners in this room, walking around. And I was, oh, that's an interesting way of looking at it. And he said, the money is out there. You just have to learn how to get them. And as the 2 speakers up here, I also had a midlife crisis. I was turning 19 and was thinking, oh my God, I'm halfway to 40, what am I doing with my life? I need to get it on. And we started to get the money. First we got ePark as partner and got money from innovation, and it kept going. The last challenge was actually that I didn't have time. When I started up, I had 4 part-time jobs, I had 4 political positions, and I was also in college. And I thought, where on earth I'm going to find time to this? But then I had a look at these numbers, 70, 80, 90. Grant, you'll perhaps become 70. I'll perhaps become 80. It looks like you work out, so you'll perhaps be 90. But the point is that life is so limited. And after this, we're gone. But what I think is that when you're getting closer to the end, you will reflect on life. What on earth did I do with it?
And I want to sit there and think, I did what I really wanted to do. I followed my dreams, and I really did what I wanted to do. I don't want to regret what I spent my life in, because it's so limited and it's going so fast. And if your dream is to get a master's degree and work in a big company, fantastic, pursue it. Is your dream to become a dancer and move to New York and dance all your life? Fantastic. Is your dream to start up a company? Great, but I think it's so important that people find time and pursue the dream, because life is limited. And life is also about having fun. Tom Peters, the famous leader guru, was in Stavanger last week. And he said, you're going to spend so many hours at work. Why don't have fun? Why don't create good memories? And I can say that the last 1.5 years, I had a lot of fun. And getting the best people and having fun is a part of life. So don't waste it going to a job you don't like, and don't waste it on regretting at the end of your life, what on earth did you do with it? We started up because we saw in the oil and gas industry, it looks peaceful, you have a lot of coffee breaks, you eat a lot of good food, a lot of time off, but there is a dangerous beast out there, known as the container. It looks harmless, but it's quite dangerous. It's like a ticking time bomb with a broken timer. You never know when it's going off. And when it goes off, the impact can be lethal. That's why we're working on a solution to make the lifting operation much more safer. We're on a patent process, so we have been a little bit disarmed, a little bit quiet about it, but we have a good response from the oil and gas industry. So to quickly sum it up, if you want to start something up, the great people are out there. There's a lot of talented and great people in the world. You just have to find them, and you just have to get them. Say yes rather than no. Don't use your life spending watching Paradise Hotel in your sofa. Get out there like this TEDx and meet new people. You never know when you meet a person who is going to change your life. And the money is out there, you just have to know how to get them. They are out there, you just have to know how to get them. And last time, if you are really passionate about something, if you really care about something, you are going to find time for it. If not, that's not your thing. Keep looking, don't settle. Because when you find it, you will find time to pursue the dream too. Thank you.